Friends, this is the first lecture on probability. So in this lecture we will give definition about experiment, random experiment, sample event, sample space event, impossible event. So let's start with the definition of the experiment. So an experiment is observing something happen or conducting something under certain condition which result in some outcome. So this is the definition of the random experiment. So some example. So example, rainfall. So lab experiment. So just first example is rainfall. So rainfall के लिए जो experiment है वो है observing हुआ इधर. So this is the experiment. So another experiment of the event is farming. So next, second definition. So deterministic experiment. So deterministic experiment. So under certain condition, if an experiment is conducted, it results in known outcome. So मतलब है जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले से ही पता है, सो उस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. सो रिजल्ट पाता है. जैसे मान लो एग्जांपल हीटिंग वाटर. सो हम लोग जब वाटर हीट करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा वेदर मतलब हॉट हो जाएगा. सो दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. एंड अनदर एक्सपेरिमेंट होता है लैब एक्सपेरिमेंट. हम लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं उन लोगों का जो आउटकम है प्रोबेबिलिटी से डिसाइडेड है. सो फिक्स्ड आउटकम है. सो इस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट का हम लोग बोलते हैं जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट. जो एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो पहले से फिक्स्ड नहीं है. जैसे मान लो दोनों टीम का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो कोई भी टीम जीत सकता है. तो इसका जो आउटकम और रिजल्ट इज नॉट फिक्स्ड. सो दस जस्ट डेफिनेशन. So this definition. So outcome is uncertain and we can fix the condition. So मतलब जो experiment का outcome not previously decided, outcome is uncertain and we can fix the condition. जैसे example, so tossing a coin. So एक coin को toss करना है तो उसका outcome क्या हो सकता है, head हो सकता है और tail. नेक्स्ट हम लोग टॉसिंग ए डाई. हम लोग जो उसका आउटकम क्या हो सकता है 1 to 6 बिटवीन एनी नंबर. सो इसका जो रिजल्ट इज नॉट फिक्स. सो इस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट का हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज द अनदर एक्सपेरिमेंट. अनदर एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑब्जर्व इट. अनदर एक्सपेरिमेंट. So another experiment we can observe is amount of rainfall during a monsoon season in a geographical area. And also हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है लाइफ ऑफ ए बल्ब. सो एक जो बल्ब और मोबाइल, सो एक बल्ब का लाइफ कितना होगा 1 ईयर 10 ईयर 10 दिन कुछ भी हो सकता है. सो आउटकम इज नॉट फिक्स्ड. सो इस टाइप एक्सपेरिमेंट का हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट सैम्पल स्पेस. सो सैम्पल स्पेस क्या डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. जो रैंडम स्पेस का जो आउटकम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है उन लोग बोलता है सुटेबल आउटकम्स इज द सैम्पल स्पेस. एंड सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एस और ओमेगा. सो दिस इज द ओमेगा और कैपिटल एस. सो एग्जाम्पल, so tossing a coin. So tossing a coin. So इसका आउटकम क्या है, हेड और टेल. सो ऑब्वियसली जो इसका जो सैम्पल स्पेस है दिस इज द एच कॉमा टी बिकॉज ऑल आउटकम. सो सैम्पल स्पेस. सो नेक्स्ट टॉसिंग ए डाई. ऑब्वियसली इसका जो सैम्पल स्पेस है सैम्पल स्पेस 1 to 6. सो 1 to 6 दिस इज द सैम्पल स्पेस. Next, choose a car. So this is the experiment, choose a car, and we have so there are 52 cars and we can shoot it
Okay, so there are the 52 outcomes. So C on to C13 and D on to D13. And next, this is the another type of experiment. So age of a death of a person, this is the experiment. So sample space का member हो सकता है omega 0 to 100. Next, definition of the event. This is previously this was the example of the sample space. Next, definition of the event. So an event is any subset of sample space. So subset of sample space is event. So definition. So ये tossing a coin. So इसका जो sample space है h, t. This is the sample space. So इसका जो event हो सकता है a set of all heads head occur, and B tail occur, and C is the head or tail occur. So this is the three event. Similarly, tossing a die, this is the sample space. Sample space, and इसका जो event है 2, 4, 6. So event number occur. Tossing a die. Next, impossible event. So impossible event is मतलब है जो पॉसिबल इवेंट नहीं हो सकता है. जो मान लो हम लोग जो टॉसिंग है डाई, तो हम लोग डाई थ्रो कर रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या हो सकता है 1 to 6. जो हम लोग इवेंट ले रहे हैं जो 7 पढ़ने का प्रोबेबिलिटी कितना. जो ये जो इवेंट है दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट और 5 इवेंट. सो जैसे हम लोग अनदर एक्सपेरिमेंट इवेंट ले रहा है. सो ए इज ए इवेंट एथलीट कंप्लीट 100 मीटर इन 5 सेकेंड. सो जो हम लोगों के पास नाउ एडेस डेटा है, इस डेटा के मतलब कोई भी एथलीट 5 सेकेंड में 100 मीटर रेस नहीं पूरा कर सकता है. सो ए है इम्पॉसिबल इवेंट. सो थैंक्स. नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द सम यूनिट ऑफ इवेंट्स एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो थैंक यू.